Hello viewers, the question is, in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 Gauss, 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla is maintained. An electron is shot into the field with the speed of 4.8 into 10 raised to the power 6 meter per second, normal to the field. Explain why the path of electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. The charge of electron small e is equal to 1.5. This is basically 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, and the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So in this particular problem, there is an electron which enters into the magnetic field. Now let us assume that the magnetic field is going into the plane of this slide and the electron is entering in the plane. So we can say that the direction or the path of electron is perpendicular to the path of the magnetic field. Now when electron enters into this particular region, magnetic field region, a force act on this particular charge. The equation of the force is given by F is equal to Q V cross B, where Q is the charge of the charged particle, which is electron in this case. V is the velocity of electron and B is the magnetic field vector. Now this equation gives the direction. If Q is positive, then according to the cross product rule, the direction is perpendicular to both V as well as B. So if the charge is positive, then the force will act in this plane and in the upward direction. But the electron is a negatively charged particle, so the force acting on this particle, on the electron, is in this particular direction, in the downward arrow direction, and it will try to move the electron into the plane, but it will rotate this particle, and at each and every point of this journey of the particle, it moves in a shape of a circle like this. So it follows a circular path. The electron follows a circular path. As you can see that the force acting on each and every point of its journey, the force is always acting towards the center of this circular path. And suppose the region is such that the electron cover whole circle in it, then it will move in a circular manner like this. So this is the explanation of the first part, that the path of electron is a circle. The reason being, the force acting on it at each and every part on its journey is always towards the center of the circular path, and the force which is acting on the electron to move it in the circular path, the force is such that it is perpendicular to both the velocity, the initial uh, direction, and the magnetic field, and when it moves further ahead, then the force always tends towards the center of the circular path. Now the radius r is given by the formula r equals to mv upon bq, where m is the mass of electron. In this case we have to use 9.1 into 10 to the power minus 31. V is the speed is 4.8 into 10 to the power 6 meter per second given in this problem. B is the magnetic field, and the magnetic field when converted into Tesla is 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla, and Q is the charge of electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now simplifying it, solving it, we get the result as 4.2 into 10 raised to the power minus 2 meters, or we can say that 4.2 centimeter. This is the radius of the circular path. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया है कि एक चैम्बर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है 6.5 गॉस का। 1 गॉस की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया गया इस फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड से, जो कि गिवन है 4.8 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है फील्ड के। सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि इसका पाथ जो है वो सर्कुलर क्यों होगा। दूसरे पार्ट में इस पाथ की रेडियस निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और इसका मास गिवन है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। तो पहले पार्ट के आंसर के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे V की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है।
और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जैसे कि शो किया गया है डाउनवर्ड एरो से, इस तरह से ये एक सर्कुलर पाथ में इसको मूव कराएगा। तो इसमें हम कहेंगे कि सर्कुलर पाथ में इसलिए मूव करता है क्योंकि इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है वो उसको, जो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो इस पे लगने वाला फोर्स है एक सर्कुलर पाथ, जो जिसका सेंटर है उसकी तरफ हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इस पर अप्लाई होगा। रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस बराबर होगी एम वी अपॉन बी क्यू। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है, टेस्ला में निकालेंगे इसको हम पहले गॉस से कन्वर्ट करके, और क्यू है द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद रिजल्ट आता है 4.2 इंटू 10⁻² मीटर्स, या हम कह सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।